हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मैं लाई हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक स्काल्प, हमारे ह्यूमन एनाटॉमी से। जो स्टूडेंट पीजीएमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हिडन नेक रीजन से 14 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। Scalp, the soft tissue covering the cranial vault form the scalp. Okay, now the extent of scalp entirely it goes to supraorbital margin, that means from root of the nose. Okay, posteriorly to the external occipital protuberance, and on each side the superior temporal line. Okay, this one is the scalp extension. Okay, नाउ लेयर्स ऑफ स्काल्प को याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। स्काल्प, एस फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स सुपरफिशियल फाशा, ए एपोन्यूरोसिस, एल लूज एल्यूरल टिश्यू, पी पेरिक्रेनियम. These first three layers are the surgical layer of scalp. या सिंपली स्काल्प प्रॉपर. ओके, आप स्काल्प के लेयर को वैसे याद कर सकते हो. ठीक है, नाउ वी डिस्कस द इंडिविजुअल लेयर्स. these layers are from outside inward. First, skin is a thick layer and hairy, and also contains sebaceous gland. It adheres to the epicranial aponeurosis through superficial fossa. Superficial fossa is the what? Superficial fossa is the connective tissue. Okay. Second, superficial fossa. It is more fibrous and dense in the center than the periphery of the head. Okay. It binds skin to aponeurosis. Okay, from this layer where blood vessels and nerve of scalp lies. Okay, then third, aponeurosis, also known as glia aponeurotica, freely movable on pericranium along with the overlying and adherent skin and fascia. आप जब आप स्काल्प को मूव करते हो तो एपोन्यूरोसिस जो होता है वो पेरिक्रेनियम के साथ अपने स्किन और फासा के लेयर के साथ ये मूवेबल होता है. ओके, एंड इट कम्स एज शॉर्ट नोट्स इन यूनिवर्सिटी एग्जाम. सो entirely it receives the insertion of frontalis. Frontalis have two muscles. Fronto-occipital have two bellies, frontalis and occipital. Okay, to anteriorly it receives the insertion of frontalis, and posteriorly it receives the insertion of occipitalis. Okay, on each side it is attached to the superficial temporal line. Okay, now the fourth one is loose areolar tissue. It is the danger area of scalp. Okay, extends entirely into eyelids, posteriorly to the highest and superior nuchal line. Okay, on each side superior temporal line. It gives the passage of emissary vein. ये emissary vein को पैसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इसमें जो एंटेरली जो फ्रंटलिस मसल जो होता है वहाँ पे इंसर्शन होती है. क्यों? क्योंकि फ्रंटलिस ये लूज एल्यूलर टिश्यू है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रंटलिस मसल का कोई भी बोनी अटैचमेंट नहीं होता है. ओके, और इमिसरी वेन जो होता है वो कनेक्ट करता है एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेनस साइनसेस से. ओके, इसीलिए स्काल्प हैज़ रिच ब्लड सप्लाई. ओके, स्काल्प रिच ब्लड सप्लाई होता है. वेन्स जो होते हैं स्काल्प के वो एकम्पेन करते हैं आर्टरीज से. ओके, अब आप इसमें द लास्ट वन इज पेरिक्रेनियम. Pericranium is the loosely attached
to the surface of skull bone. Pericranium surface skull bone से loosely attached होता है और ये outer most layer होता है cranial bone का. Okay, अब now you can see in the diagram, this one is the superior sagittal sinus, okay, and this one is the dura covering of brain, okay, and this is superior sagittal sinus, okay. Skin, and in this connective tissue there is blood vessels, okay. This one is emissary vein which connects extracranial veins to intracranial venous sinuses, okay. Then there is the aponeurosis, connective tissue, and pericranium. That's why these layers are from outside inward, okay. Now come to the blood supply of scalp, because scalp has rich blood supply, okay. Then arterial supply in front of auricle के आगे स्काल्प सप्लाई होता है 3 से, सुप्रा ऑर्बिटल, ओके, supratrochlear and superficial temporal arteries, okay. These two are supratrochlear and supraorbital are the branches of ophthalmic artery, which in turn internal carotid artery, okay. क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी का ब्रांच सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल, ओके. एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो है वो ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का. तो ये 3 आर्टरी हो गए इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल. नाउ बिहाइंड द ऑरिकल स्कैल्प इज सप्लाइड बाय 2 arteries, posterior auricular artery and occipital artery. These are the branches of external carotid artery, okay. Now the veins of scalp accompany the arteries, so have similar names, okay. तो जैसे जैसे 3 ऑरिकल के सामने आर्टरी सप्लाई होता है और 2 बिहाइंड, तो वैसे ही वेनस सप्लाई भी होगा. वेनस सप्लाई में सुप्राट्रोक्लियर वेन एंड सुप्राऑर्बिटल वेन यूनाइट एट एन मीडियल एंगल ऑफ आई का जो मीडियल एंगल है, नोज आई मीडियल एंगल है, वहाँ पे यूनाइट करते हैं और फॉर्म करते हैं एक एंगुलर वेन, एंड दिस एंगुलर वेन्स कंटिन्यू डाउन एज फेसियल वेन, ओके. नाउ थर्ड वन इज just like artery, superficial temporal vein, and 2 others important veins are emissary vein and diploic vein, okay. Diploic vein has 2 branch, frontal vein, frontal diploic vein and occipital diploic vein, okay. Now the lymphatic drainage of the scalp. Anterior part of the scalp drains into parotid या pre-auricular lymph node, okay. Posterior part of scalp drains into mastoid post-auricular and occipital lymph node, okay. Now the nerve supply. Scalp and also the temple are supplied by 10 nerves on each side. 5 nerves, 4 sensory, 1 motor. These enter the scalp in front of auricle and 5 enter behind the auricle, in which 4 are sensory and 1 is motor. Now the names are simple. Just zygomaticotemporal, auriculotemporal, supratrochlear, supraorbital and temporal branch of facial nerve. These 4 are sensory and 1 temporal branch of facial nerve is motor, okay. Now behind the auricle, posterior division of great auricular nerve C2 and C3 of cervical plexus, lesser occipital nerve C2, greater occipital nerve C2, third occipital nerve C3. These 4 are sensory and 1 posterior auricular branch of facial nerve
is more. Now you can just remember this as a mnemonics, just zygomatic-temporal, okay, auriculotemporal, supratrochlear, supraorbital, and temporal branch of facial nerve. Now इसको आपको खुद ही लर्न करना होगा, और लर्न करने के बाद आपको ऐसे याद करना है, एलपीजी गैस सिलेंडर है, एलपीजी पीटी, ओके, आप ऐसे याद कर सकते हो। एंड आर्टेरियल और वेनस सप्लाई जो है वो आप याद कर सकते हो। अगर आर्टेरियल भी याद हो गया तो वेनस में केवल आगे में वेंस लगाना है, 2 एक्स्ट्रा वेंस याद रखने होंगे, इमिसरी वेंस और डिप्लोइक वेन, ओके। और डिप्लोइक के 2 ब्रांचेज है, फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल डिप्लोइक वेन, ओके। नाउ दीज आर द स्काल्प्स, ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो whatsoever the reason, then don't forget to like this video and subscribe my YouTube channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत